Good morning. See, this is CA Swarup Ghosh from Stock Show Deck. Welcome all you on board. लास्ट वीक बड़ा चॉपी वीक था विथ नेगेटिव बायस. तो पहले हम शुरू करने के पहले आई थैंक यू ऑल ऑफ यू इस वीक के लिए जो आदमी those who have participated in the Zoom meeting, and I thank you for your interest. And we are also very excited in this mode that advanced stock scanner, super advanced indicators are all open to everybody, and I thank you for people who are actually availing this facility. Any indicator you pick up, there are three I'm offering, 3 to 4 offering. So whatever you want, you can go on this mode, that quarterly payment, that is 15,000 for 3 months. And also I am excited to people that this Gantt chart is basically are helping people. ये हमने काफ़ी सारा वीडियो बनाया, तो इसके ऊपर हम और दूसरा चर्चा नहीं करेगा. तो इसके लिए you are already and if you are not knowing, I refer to the video sections in the description box, and आपको मिल जाएगा. ये वाला गैन बेहतरीन है. सो दिस इज वेरी प्योरली फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, and this sheet is now valid for 365 days. Earlier 730 days tha, abhi 365 days, and this sheet will cost you 15,000. That is already there in our plan. Okay, so now let us also show you some of the GAN things that we are also working. That time cycle forecasting, that's basically I have not yet finalized, but it is already happening. So once it is available, we should be able to give you that product. Okay, now the indicators, which are basically, this is a father son indicator, and you can refer to my previous videos for this kind of indicators, where father son grandfather technique of RSI at the higher time frame in one chart view, so that you can take a decision, is also available. Okay, this is also available, and along with that you have these two indicators. One is your GAN aura all-time high indicator, and another one is your SS master GAN setup. Okay, these are the two indicators, are very powerful indicators, and कैसे powerful है वो हम बताएंगे अभी. Now हम लोग जो ट्रेड किया था फ्राइडे में, आई विल बी शेयरिंग 2 ट्रेड्स. वन इज ऑन सिप्ला एंड वन इज ऑन इंडिगो फ्यूचर. ओके, बोथ आर फ्यूचर्स. अब देखिए, विद दिस you are not understanding the naked chart excepting some movement, and that's basically a W pattern. It could be a W pattern. Okay, so it is under formation. तो हम लोग कैसे ट्रेड किया है सिप्ला को. So ये जो ट्रेड जो है, पहले let us switch on one chart, that is master GAN setup. Once we switch it on, ये master GAN setup में आपको दे क्या रहा है, वो बेसिकली आपको देखना है. पहले आप देखिए, मैक्सिमाइज कर लिया. Now in this setup, this is only one indicator, nothing else. Everything is blank now. Now in this particular indicator, you actually get a level, sell below what, 2146.8, and आपका buy above this level. Yeah, this is the level, because both the levels are coinciding. So 2162. Okay, 2162.4, this is the level. And it actually आपको दिन जब चालू होगा ना, आपको इसी लेवल में ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा. Okay, now this also now yesterday we have included one more thing, that is a bias. What bias it is? That bias is bearish bias and bullish bias, and ये जानने के लिए you have to hover the mouse at any point of time. आप अगर जानना चाहते हो, भूल जाते हो, तो इस पे bearish bias क्या है, and कुछ जगह पे आपको average confirmation भी आएगा. So therefore Q, ये तीनों चीज में हम क्या क्या डिफरेंट है. जब आपने सर बोल दिया बाई अबव, तो उसकी बाद बियरिश बायस, ये सारा कंफ्यूजिंग है. इट इज नॉट कंफ्यूजिंग. सो बेसिकली इसमें जब फर्स्ट ऑफ ऑल ये बियरिश बायस जब आएगा ना, तब हम ऊपर में सेल ऑन राइज करेगा, एंड ये सेल में जेन्युइन दिस इज लेवल है. सेल बिलो जब लेवल में जाएगा, तो उसमें वो सेफ ट्रेडर करेगा, एंड दिस इज फॉर एग्रेसिव ट्रेडर.
ओके। एंड जब एवेट्स कन्फर्मेशन है वो जोन में, ये दोनों जोन में अगर गिर जाएगा ना, तो हमने ऑटोमेटिक एवेट्स कन्फर्मेशन ये आ जाएगा, बिकॉज दीज इंडिकेटर्स आर इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। जब आपने मान लीजिए गाड़ी में है, या यू आर नॉट अलोंग यू नो इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप और एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज ट्रेड इट विथ योर मोबाइल। सो दिस इज द थिंग। एंड माउस ले जाने से आपका होवर वो दिखा देंगे है क्या मीनिंग, and then these are all technical lines. Okay, now along with this, you can always trade in this indicator, one indicator basically ये cobra line है, cobra line के नीचे होगा तो it is bearish anyway, so basically आपका speed bearish, सब कुछ bearish है, and cobra line जब cross करेगा आपका इधर आपका ये मिलेगा सिग्नल मिलेगा, तो therefore ये वाला जो सिग्नल है, you actually you start getting this signal, and then you can buy. Okay, and you can see the result in front of you. Okay, along with that I also once we ये difference क्या है, ये दोनों में difference जो है, ये दोनों difference यही है। आप देखिए ये इस टाइम ये आ गया है, आप देखिए if I switch it off, आपका निफ्टी अगर आपकी नेगेटिव है, so basically overall market nifty is negative. So first of all, that's a very important information. Now indigo, you can always change it to change your you double click and change the your sector. See, supposing here I change it to service sector. Okay, CNX ACR. If I say CNX service sector, because indigo is a service sector, service oriented, so if I put it here as indigo in service sector, automatically this will be redrawn, and sorry, it has not been saved. It has not been saved. I will not this one, this is nifty. There are so many features inside this. Service sector is this one. So this is service sector, CNXACR. Now this is service sector. This is basically first one is when you treat on play on index, तो वो index का वॉल्यूम लेता है, इसीलिए वो चेंज नहीं हुआ। अब देखिए ये CNX सर्विस सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर इज bearish. Okay, so if the sector is bearish, even if the stock is performing good, you will be looking for a short. Okay, now these are the median lines, very important median line, the black line. Okay, and this yellow candle is a huge movement candle. Okay, that separates from other candles, जिसमें volatility है and volume है, volatility है, what is not there, everything is there. Okay, now up once you take this indicator, this is a price action based indicator. Okay, सो जहाँ आपका ये सब लेवल मिल जाएगा 2116, ये जो है these are day opening level and all those, you will get it here. Okay, now let us open these two levels. Okay, now इसमें हमने देखा कि 18th को सुबह आपका ओपन कितने में हुआ है, आप देखिए इसमें जाइए 9:15 में आपका ओपनिंग प्राइस है 2155.40. Okay, 2155.40, which is this level. So this level will there be with you throughout the day. Okay, now इस लेवल में बाई जनरेट किया, बाई अबव दिस लेवल, सो देयरफॉर इस लेवल में बाई लेवल में गया ही नहीं है। कब इसमें जनरेट होता है, एट 9 o'clock ये लेवल जनरेट हो जाता है नेक्स्ट डे। सो देखो आपको पता चलता है कि अगर स्टॉक इसमें इसको ऊपर जाएगा तो हम देखेंगे नियर बाई रेजिस्टेंस है क्या नहीं, फिर उतना छोटा हम काम करेगा, और नीचे है तो वैसे हम रेजिस्टेंस देख के करेगा। नाउ वंस द स्टॉक ओपनड इन दिस पर्टिकुलर केस, आपका ओपन तो हुआ है। नाउ ओपन जब स्टॉक हुआ है ऑन मंडे, सो बेसिकली ये वाला जो कैंडल है, देयर इज ए रिजेक्शन, सो बाई अवर लेवल में रिजेक्शन आया है। सो देयरफॉर डे ओपनिंग प्राइस जो है ओपनिंग प्राइस के नीचे है, कोबरा लाइन ब्रेक किया है। सो वंस दिस इज डन, सो वी गॉट ए फीलिंग दैट आपका सर्विस सेक्टर भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सो आई विल हैव ए बियरिश बायस। सो द मोमेंट बियरिश बायस, दो टाइप की ट्रेड होता है, एक तो है आपका इसके नीचे आएगा एंड दिस मीडियन लाइन एक्ट्स एज ए सपोर्ट, एंगुलर सपोर्ट। सो इवन जब मीडियन लाइन के नीचे होगा ना एंड द सेल लाइन होगा, आप इस जगह पे शॉर्ट कर सकते हो। ओके,
This is where you actually, you can short it at 2141, and then you can ride this trend till I would get out at this level, because this is a very very important level. Why it is very very important level? You see here, why is it important level? uh, we have a GAN, cube and square line. Let me switch off this particular line, then you will understand why is it so important. वहां से निकल गया तो ये वाला line जो है, these are all automatically calculated, okay? 2116, and in this level you can get out of this trade, okay? And you have not only that, you have multiple big GAN resistance support here. So therefore this is the area where you should get out of the trade. And for safe traders, again, this angle trade you can continue from this median line to this median line, okay? This is one part, okay? Now if you really switch off one of these, doesn't really matter. If you are taking only one indicator, that is also good enough. In this indicator you will not get the trend line, auto trend line, GAN trend lines, and this is without trend lines, okay? Now but these levels are very very sacrosanct level है। यहाँ जब आपने सेल किया, आप देखिए कोई भी स्टॉक हम और एक चीज और एक दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। सो एज पर दिस इंडिकेटर आपने सेल बिलो इस लेवल में करिए। सेल इस लेवल में, सेल बिलो मीन्स सेल बिलो आपको लगा के रखना पड़ेगा 2146.8 विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ हियर, एंड देन आप 2146 में सेल करोगे तो आप देखिए ऑल टाइम हाई में आप यहाँ भी एग्जिट करते हो। हम लोग ऑल टाइम हाई लेवल में एग्जिट किया है। फ्रॉम हियर अगेन वी री एंटर्ड एंड वी एक्चुअली लेफ्ट आउट हियर। सो बेसिकली यू हैव सोल्ड एट 2146, यू हैव सोल्ड एट 2146 एंड 2091 में हम लोग निकल गया। सो 2091, अब देखिए 2091 माइनस 2146 was our level. Minus 2146 was our level. So basically हम लोग कितना पॉइंट हमको मिला है? हमको मिला है 55 पॉइंट्स। सो 55 पॉइंट्स इंटू 250 लॉट्स, बेहतरीन ट्रेड है 13,750 का। Okay, so this is basically one single indicator. You can do this. I will show you the bank nifty and the normal charts also. And another trade what we have taken in CIPLA का lot size 6.5 है, okay? So 650 lot है। So you switch on this particular setup। अब CIPLA में देखिए सेम थिंग आपका क्या है? CIPLA, लेट मी स्विच अप। या निफ्ला में आपको बाई अबव लेवल है कितना? 928 एंड 928.5 एंड 926। सो बेसिकली ₹2 का स्टॉप लॉस है। एंड यू कैन, द मोमेंट आपकी खोला है 915 में, आप जब बाई सेल लेवल में नीचे है, आप यहाँ सेल कर दो आंख बंद करके। ये सेल आंख बंद करके बोला, बिकॉज दिस इज ए विजुअल ट्रेड। तो यहाँ अगर सेल करता 925 पे सेल करने से, सिंपली इफ यू आर राइडिंग दिस यू कुड हैव गॉट आउट एट दिस लेवल। मेजर सपोर्ट एट 906। तो CIPLA एक्चुअली वी हैव सोल्ड एट दिस लेवल आफ्टर दिस कंफर्मेशन। सो 924 में एंड 904 में आपका 904 में हम लोग निकल गया। यहाँ जब आपने बेंड मारा 904 905। सो बेसिकली 20 पॉइंट आपकी CIPLA में आपको मिला है। आपका लॉट साइज है आपका सीज का लॉट साइज है 650 एंड देन 650। अब फ्यूचर में ट्रेड करोगे तो कितना जल्दी आपको मिल जाएगा। आप देखिए उधर 13,000 या 26,000 की स्ट्रेट इनकम विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड ये नहीं कि खाली CIPLA में हुआ है या अदर चीज में नहीं हुआ है। सो ऑटोमेटिकली दिस लेवल्स एंड एवरीथिंग इज doable. It is so simple setup. Okay, I will show you a live market setup. I think that will be better. Let's see one thing. Let's switch it off. Here in the live market, if you want to see, this is USD BTC, and I have this setup and trend angle. So basically here also if you look at the right live market, what it is telling you,
it is telling you, let's go to the 15-minute chart, that will be better, then you can always have a good view. What it is telling you is buy above 40,102 and sell below आपका 39,892. Okay, this is basically 39,892 means 39,900 and basically 200 point की आपकी gap है. Now इसमें see how beautifully you can trade with this setup. Okay, let me first look at switch off. Let me take only one setup at a time. तो ये बाई अब आप बोला तो ऑब्वियसली आप सौदा लगा के रखेगा 40,102 में with a small stop loss of 200 points, and then you can always ride that. Okay, here also it has gone to 50% is the stop loss. All this you can do as per your appetite, but once you once you switch it on, you will know that this is a big level, and you have a trend line angle. So without the first one, you will not be getting the trend line angle. The moment I get an angular kind of setup, I will be cautious. The moment I start getting a rejection here I will book my profit. So 40,103 से आपका 40,300 में आपका ये मिल जाएगा. ओके, दिस इज अ वेरी डूएबल ट्रेड. एंड जब ये आवर आके आपने रिटेस्ट किया है, यू आर टेकिंग ए सपोर्ट, एंगुलर सपोर्ट, अगेन इट विल गो अप. द मोमेंट इट गोज डाउन, यू सेल बिलो दिस. ओके, सो it's a very easy setup for us to really do. Let us look at US 30. I know these are all used by my US students. आप देखिए प्रीवियस डे में आपका बाय अबव इतने में हुआ है, नेक्स्ट डे आपका गैप डाउन आपका इतने नीचे है आपका. दिस इज अराउंड 4:30 in the 8th for the morning, and you get this kind of levels. Okay, this is how people play in the US market. So ये बाय अबव लेवल के ऊपर आ गया है, आपने सेल बिलो लेवल में ये सपोर्ट लिया है, यहाँ से बिग कैंडल मारा, ऊपर गया. अब देखिए कितना इजी विजुअल ट्रेड है. नाउ if you find such a thing, such a good helper, where it will constantly give you the signals, you can it is easy for you to trade. If you come here at this level, you have a trend line rejection, you have a it's a kind of cobra signal that your price come below cobra line, and then you have a great double top at this level. So therefore all these are saying that it's a rejection area. So therefore आपने rejection आप sell कब करोगे in an aggressive. If you have these two levels, then you can always take these kind of rights. Once you go retested, ये ऊपर में वो sustain नहीं किया, so buy above में इतना बड़ा rejection आया है, so therefore it is a sell. The moment it crosses here, you can always take this take this call. And again if you go here, you got a circular setup. So I do not want to confuse you by telling so many things, but our students know that how the trade can be executed. So once there is a reversal from what, from a SD 2.5, this is standard deviation 2.5 से ये rejection दिया, so it's a good support. The moment you get a support, you have a major support at 34,055. So then once you have a 34,055, आप यहाँ इस level में buy कर सकते हो at this. But this is also 1.5 and 2.5 क्रॉस करने के बाद ये बाइंग ही होगा at least for some time. देन आप इसमें जब देखेंगे रिजेक्शन करेगा तो सेल बिलो में आपने सेल कर दो. दिस इज ये प्रॉफिट बुकिंग एरिया. आप वेट करो, इसको क्रॉस करेगा तो बाई करेगा, इसके फिर नीचे आएगा तो सेल करेगा. सो दोज आर द थिंग्स यू कैन ऑलवेज डू इट. इफ आई लुक एट निफ्टी नाउ, लेट्स गो टू निफ्टी. I will tell you how Nifty was traded. See, it is so very easy for you to really get into this levels. Now आप देखिए निफ्टी कंटिन्यूअस 3 डेज, ये खाली फोकस ऑन दिस हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइन, कंटिन्यूअस 3 डेज आपका नीचे लोअर लो है. सो देयरफॉर निफ्टी हैज अ bearish bias, as simple as that. I am seeing this. These are all GAN lines, okay, by the way. So इसकी हम बंद कर देता हूँ. आप देखिए 3 दिन नीचे है. सो देयरफॉर इसमें जब थर्ड डे में निफ्टी करेगा तो आप दिस इज द लाइन वेयर you have its confirmation. It picks up
picks up the current location and then said at this current level at 1515, आप कुछ नहीं करोगे because this awaits confirmation. So therefore हम ना सेल करेगा ना बाई करेगा. इसको क्रॉस करेगा तो ऑब्वियसली bearish आपका bullish confirmation आ जाएगी. ये इसके नीचे आएगा bearish confirmation. Okay, let's look at bank nifty. So बैंक निफ्टी भी आप बैंक निफ्टी की भी आप हम चार्ट देख लेते हैं, इंडेक्स फ्यूचर बैंक निफ्टी. You see, let me now this time move to the 5-minute chart and then you will be able to see it properly. आप देखिए बैंक निफ्टी में, in the bank nifty में bullish bias आया. क्यों bullish bias आया? Because at this current candle you have a bullish bias. Now at 37,415 जब क्रॉस करेगा, the moment ये क्रॉस करेगा आपको बाई करना है. ओके, नाउ आपने ये करके हम करते हैं कि इसमें क्रॉस करने का बाद रिटेस्ट करने का बाद हम करता है. सो बट डिपेंडिंग ऑन दिस स्लोप एंड अदर थिंग्स वी डिसाइड व्हाट टू डू. देयर इज नॉट नो सेट रूल्स फॉर स्टॉक मार्केट. तो इसमें अगर रिटेस्ट में करना है आप करो. रिटेस्ट में करने से आपका स्टॉप लॉस कितना होगा? नीचे होगा. सेल बिलो की 50%, ये वाला लेवल में 50% में आप स्टॉप लॉस ले लो एंड देन ये हिट करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एटलीस्ट यू आर नॉट लूजिंग मच. ओके, बट ये अगर जाएगा, आप देखिए सेकेंड टाइम रिटेस्ट, फर्स्ट टाइम गया, सेकेंड टाइम रिटेस्ट करने का बाद ये कहाँ गया है? It's going up and up and up, and it is always, you will be exiting the trade only when the stock closes below cobra line. Okay, so closes below cobra line नहीं. So यहाँ जाके आप देखिए फुल रिजेक्शन जोन में आ गया. रिजेक्शन जोन में आप बिग कैंडल मिला, कोबरा नीचे है, रिटेस्ट किया है, आप सेल कर दो. So you can always take an options here. I do lot of option trading based on this particular indicator only. And then this indicator का साथ आप ये भी indicator ले सकते हो. And then this is purely a price action. आप देखिए इस जगह पे आपका रिजेक्शन भी हुआ है. So therefore this is first of all interim profit book करोगे. interim ये जब आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, आप ऑप्शन निकाल जाओ, फिर इसमें फिर ऑप्शन ले लो. ऑप्शन दो बार करने से कोई हर्ज नहीं है. यू आर सेविंग दिस काइंड ऑफ ऑप्शन डीके एंड देन आप निकाल जाओ. सो काफ़ी सारा चीज़ दिमाग में रखते हुए ये बनाया गया. एंड वंस यू गेट दिस काइंड ऑफ एरोज, दिस आर डेडली एरो, बहुत बेहतरीन मूव आएगा. एंड सी द एंगुलर लाइन, इसकी बाद जो एंगल वो फॉर्म किया है वो डेंजरस एंगल फॉर्म किया है. दीज आर ऑल गैन एंगल्स. आई हैव नॉट मैन्युफैक्चर्ड एनीथिंग, आई हैव ओनली कोडेड दिस. ओके, एंड दिस इज द एरिया 37,636. ये नंबर जो है, ये नंबर ना आपका ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन दिस इज 194 स्क्वायर नंबर. Okay, and these square numbers and cube numbers all are automatically it comes in the way. Okay, so आप ऊपर में जाओगे तो ऑटोमेटिक क्रिएट किया होगा कि स्क्वायर नंबर एंड क्यूब नंबर, सो दैट you have this is 34 क्यूब. सो ये ऑटोमेटिकली ये गैन की स्क्वायर नंबर एंड क्यूब नंबर प्रिंसिपल्स में ये काम करता है. सो देयरफॉर ये वाला जो है मेन मीडियन लाइन. So you have many price action model. These two basically I personally use जहाँ हम ट्रेड करते हैं and that becomes profitable. Okay, so and you also follow me in Twitter, I suggest, because in Twitter I publish lot of charts and then I explain the charts. Unconventional method में average confirmation आया है, so I explain the chart and you can take as a reference point, reliable reference point. Okay, so ladies and gentlemen, if you are interested, contact me at 91430 for taking this kind of advanced setup on rental basis. This is CS Swarup Ghosh from Stocks Today. Bye bye for now. Take care.